पूरी रेडी नहीं है। Hey guys, welcome to my channel. Be Human First United. Then we reached to Jaipur almost morning 10:30. In night we took stay. In night we stayed at Kuchaman, my cousin's house. We left morning 8:30 and reached Jaipur by 10:30. So we reached our home and temperature is too high in Rajasthan. It's 40-42 सेल्सियस डिग्री। बहुत गर्मी यहाँ पे है। मैं आके यहाँ पे सो गया था और अभी उठा मैं। In night after Chittor till Kishangarh there was full heavy rain and this road was completely under construction. नए ब्रिजेस, नए फ्लोर, नई लेन्स वगैरह बन रही है वहाँ पे। एंड to cover 250 किलोमीटर we took almost 6 to 7 hours. The road की कंडीशन बहुत ख़राब है और ट्रक्स वो आँख बंद करके वो लोग चलाते हैं and you cannot drive in night when trucks are on zoom. फिर भी धीरे धीरे करके हम चलते गए और लास्ट में because of this we reached Kuchaman night 12:30 1 o'clock somewhere, and we thought it's better to stay here. Then we stayed at my cousin's house in Kuchaman and morning by 8:30 I left from there. 10:30 I reached in Jaipur morning. मैं फिर थका आ रहा था, नहा धो के सो गया मैं, अभी उठा हूँ and I just conclude my vlog. यहाँ पे बहुत गर्मी है और टेम्परेचर मेरे हिसाब से 40-45 के आसपास में है। और बारिश जब होती है तब यहाँ पे ठंड हो जाती है और अगर बारिश नहीं होती है तो यहाँ पे टेम्परेचर और हाई हो जाता है। हाल फिलहाल उमस है, गर्मी बहुत है। अब देखते हैं 2-3 दिन यहाँ पे हम लोग रहेंगे। और जैसे बॉर्डर पे बोला गया है कि आपको थोड़ा लोगों से डिस्टेंस बना के आपको रखना है फॉर 3-4 days and it's not required for self quarantine और क्वारंटाइन ऐसा कुछ यहाँ पर रास्ता में नॉर्म्स वगैरह नहीं है। तो यू कैन जस्ट आप डिस्टेंस बना के रखो 2-4 दिन, वो आपके लिए एंड आपकी फैमिली के लिए बेटर है। एंड उसके बाद में हम धीरे धीरे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे लोग मेरे एरिया के हमारे ये सब फ्रेंड्स शाम को यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते हैं। ये सब मेरे डैड के फ्रेंड्स हैं, तो दे प्ले वॉलीबॉल इन इवनिंग ईयर। सही बच्चे हैं काफ़ी। When you want to travel on road, there will be 100 questions which in deal, and there will be hundreds of problem which all you need to deal and go. Many things all unpredictable and they all just happen sudden, and we and our body we may not be planned for that. Something it's happened for good and something it's happened for bad. So we should be alert and we should always be ready to deal any situation anywhere. So when I was left Bangalore, I was completely ready with all those things. I was well prepared. Let's go, we'll deal with all problem. I prepared my mind, because traveling from Bangalore to Rajasthan in this epidemic region, there will be many problems, many road tax issues, toll issues, RTO issues, pass issues, e-pass issues, several issues are there. So
if you have all those things, even still people will no stop you and they will question. So once you if you are prepared for all those things, either if you have documents or no documents, सफ़र में जो मज़ा है वो मंजिल में नहीं है. I have enjoyed my this journey. Reaching destination was just a task. We may reach or we would reach 1 or 2 hours early or late, or maybe next day. But what all we have enjoyed, in between this journey, that's moment or markable. My house, these locations belong to near Kalwa Road, which is near Kalwa Road, and from main road my house is only 100 meters. So till Jaipur my journey is completed after all, and I had good bad many experience which I have shared to you in my all vlogs. Hey guys, please like and subscribe my channel. Be Human First and United Then. Bye.